Welcome students. Welcome to the lecture number 11 of chapter Conditional and Looping Constructs. In the previous lecture, we have done some questions related to pattern printing. Okay? And in that we print all the types of triangles. Okay. So now in today's lecture, we are also going to do pattern printing also. But in this lecture, we are doing the pattern printing of some difficult patterns. Okay, so let's see that how we are going to do it. So the first pattern that I'm going to use is, let me open the file, new file. Okay, so this is the comment, and suppose the pattern that I want to print is basically like this: 1 0 0, then 1 1 1, then 0 0 0 0, like this. Okay, so I want to write a program to print a pattern like this. Okay, so first let me see that what will be the logic for developing this pattern, and then we write the code. Okay, so for explaining you the logic, I'm opening the MS Paint app. Okay, so let's wait. Yes, now the MS Paint application is open. So the pattern that we are going to do in this code is, first I want to print 1, then 2 zeros, then 3 ones and 4 zeros. Okay, so this is like the pattern. Okay, so as you all know that this pattern is basically of this type of triangle, right? And we have already done the code of this type of triangle in our previous lectures, but in that case we have printed the star, but now we are not going to print the star, we are going to print 1 or 0. Okay, so the logic for printing the same this triangle is absolutely the same. Okay, so I just write the same code that I have used to print the triangle. Is that first you have to take the number of lines from the user. So I will take that, enter number of lines. Okay, so after taking the number of lines from the user, I simply write the code for it, that for a in range 1 comma n plus 1. Okay, and in this we write the inner loop of range 1 comma a plus 1. Okay, and we have printed the value of star in our previous cases, and we put the value of end so that the cursor will not move to the next line. And then this print bracket is basically used to, once this B loop is over, okay, it print the star in one line, and after that this print function will move the cursor to the next line. जैसे कि एक लाइन में जितने भी स्टार्स हैं उनको प्रिंट करने का काम ये बी लूप मैनेज कर लेगा, लेकिन जब उस लाइन के अंदर सारे स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे और ये लूप खत्म हो जाएगा, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करवा देगा. सो जस्ट ये हमने पिछली बार भी किया था, जस्ट थोड़ा सा मैं इसको फटाफट रन करके दिखा रहा हूँ आपको, दैट व्हाट विल बी द आउटपुट दैट वी आर गोइंग टू गेट इन दिस केस. ओके, now it is asking me to save the code first, so I will save it by the name of P6. Now you can see that so now it is asking me about the number of lines, and suppose if I give the number of lines as 7, so you can see that I will get this triangle. But now my question is that in spite of these stars, I don't want to print the stars, but I want to print 1 and zeros in this case. Okay, so now I have to think about the logic that when I'm going to print the 1 and when I'm going to print the stars. Okay, so for learning about that logic, we have to plot the different values of a loop. Okay, you can see that this is my loop, so I will just copy this loop and paste it in my MS Paint app. Okay, so I have just pasted this for loop over here. Okay, so we know that the loop A will move from 1 to the value of n,
Okay, so first we will plot the values of different values of a over here. So for the line number 1, the value of a is 1. Okay, let me do one thing. I will just decrease its size, because yes, one more, 16. Yes. So as we know that for the first line the value of a is basically 1. Okay, and when we move to the second line, okay, in that case the value of a becomes 2, and when we move to the third line the value of a becomes 3 for that, and for the fourth line the value of a becomes 4. Okay, so what is basically the logic that I am going to think over it कि भाई कब मुझे 1 प्रिंट करना है and कब मुझे 0 प्रिंट करना है. Okay, so I have to think over it. सबसे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए, when same data is printed in the line, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 1 ही प्रिंट हो रहा है, अगर आप ऊपर देखेंगे तो 0 तो 0 0 ही प्रिंट हो रहा है. इफ द सेम डेटा इज प्रिंटेड इन द पर्टिकुलर लाइन, तो आपने हमेशा क्या करना है, आपने इस ए को लेकर लॉजिक बनाना है. सो जस्ट सी कि भाई क्या लॉजिक बन सकता है. अच्छा, पहले आप ये देखिए कि 0 कब कब आ रहा है. एक तो इस लाइन में 0 आ रहा है और एक इस लाइन में 0 आ रहा है. इन दो लाइन्स में 0 आ रहे हैं. अच्छा, ये दो लाइन्स जिसमें 0 आ रहे हैं उसमें ए की वैल्यू क्या है, इसमें ए की वैल्यू 2 है और इसमें ए की वैल्यू 4 है. सो यहाँ देखकर मुझे लग रहा है कि यार जिस समय द वैल्यू ऑफ ए इज इवन, बिकॉज 2 and 4 आर द इवन नंबर्स. सो व्हेन द वैल्यू ऑफ ए इज इवन, in that case we are going to print zeros, and when the value of a is odd, you can see that the value of a is 1 over here and the value of a is 3 over here. So in the odd values of a we are going to print 1 in that line, right? So we are going to just use that logic over here. So in this case I am not going to print this star, let's remove it, and now I have to check the value of b first. So I have to write the code in b loop that if a mod 2 is equal to 0, it means if the value of a is even. So you know that in case of the even we have to print the zeros, so we will write print 0 and comma end is equal to within that line, right? But if else, if the value of a is not even, okay, in that case we have to print 1 in spite of 0, right? So we'll write end is equal to like this. Okay, so according to the logic that we have discussed over here, that when the value of a is even, then in that case we will print 0 in that line, but when the value of a is 1, in that line we will print 1. So this is basically the code for it. Okay, so let's run this code and see what will be the output for us. Okay, so first it asks me about the number of lines. Suppose if I have given the number of lines as 7, so now you can see that we are getting a triangle which fills with 1 and zeros. In the odd number of lines we are getting 1, and in the even number of lines we are getting zeros, right? So this is the first code that we have discussed over here. Okay, and you just note down the code. This is the program pattern and this is the code for it. Okay, so after that let's move to the next code. So my next code is basically, let me remove this thing, because in my next code I have to print it like this: 1, then 0, then it will be 1 0 and 1 0. Okay, so my next code is this. Okay, I have to print the 0 and 1 in this form, in this triangle. So obviously as we are going to print this type of triangle also, so the code will remain the same. Only what we have to do, we have to make changes in this area, that what we have to print in this case. Okay, the loop will remain the same because the pattern of the triangle is like this. Okay, but in spite of star we are going to print 1 and 0 in this case. So let us see that what will be the criteria for doing it. So let me first remove this thing. Okay, and also remove this code from here. Now, so first I will see that how we are going to set this diagram. So I have taken a 1. Okay, and in the second line I want 1 and 0.
in the third line 1 0 and 1, and in the fourth line I get 1 0 1 0. Okay, so this is basically the pattern for it. Okay, so as I told you that first you have to plot the values of a. Okay, so before going to think about any logic, first just plot the values of a over here. Okay, so the value of a will be 1, or the value of, for the second line the value of a will be 2, for the third line the value of a will be 3, and for the fourth line the value of a will be 4. Okay, so different values of a will be plotted. अच्छा, now अब मैंने आपको बताया था if the same data is printed in the line, तब तो आप a को लेकर लॉजिक बनाओ, बट इन दिस केस द डेटा इज नॉट सेम. ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि भैया डेटा तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तो नहीं आ रहा है यार यहाँ पे. ठीक है, ओके, सो यहाँ पे क्या करें हम, बिकॉज सेम डेटा तो यहाँ पे मैं जरा इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि लाइंस थोड़ी प्रॉपरली आ सकें. सो ओवर हेयर 1 0 1. ओके, सो बात यहाँ पे हो रही थी कि भैया मैंने आपको बोला था व्हेन जब लाइन के अंदर सेम नंबर ऑफ सेम डेटा प्रिंट हो रहा हो, इन दैट केस गो फॉर द वैल्यू ऑफ ए टू बिल्ड अप द लॉजिक. बट इन दिस केस द सेम डेटा इज नॉट प्रिंटेड इन द लाइन, बिकॉज यहाँ पे 1 है, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, सो द डेटा इज चेंजिंग. सो अब मैं क्या करूँ, बिकॉज सेम डेटा तो आ नहीं रहा. देन यू कैन सी दैट वी हैव अ सेकेंड लूप in this case for B, because A is basically for managing the rows, and when we are same data in each row, then we take the value of A for building the logic. But now same data is not present in the rows, the data is changing. So for managing the data of the row we use the B loop. So now what I am going to do, I am going to plot the values of B for it. Okay, so कैसे करेंगे हम यहाँ पे, जैसे सपोज मान लो जब जिस समय A 1 है तो यहाँ b वाली वैल्यू भी हमारी 1 तक ही जाएगी, 1 से ऊपर तो जाएगी नहीं. और जिस समय a 2 होगा तो b की वैल्यू हमारी फर्स्ट वाले के लिए 1 जाएगी, फिर उसके बाद 2 जाएगी. ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंट्री के लिए 1 वैल्यू होगी और सेकंड एंट्री के लिए हमारी 2 वैल्यू होगी. सिमिलरली अगर सपोज मान लीजिए मैं जब a की वैल्यू 3 है तो उस समय b की वैल्यू एक बार हमारी 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी. ठीक है, यानी कि ये 1 2 3 ये हो गया. और जिस समय a की वैल्यू 4 होगी उस समय हमारी b की वैल्यू जो है वो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी. ठीक है, अच्छा, अब मैंने कहा यार a की वैल्यूज को लेके तो लॉजिक नहीं बन रहा, अब क्या लॉजिक बन सकता है. अब जरा ध्यान से देखिए कि जिस समय b की वैल्यू 1 है, जैसे इस लाइन में b की वैल्यू 1 होगी तो 1 आ रहा है. यहाँ पे जब b की वैल्यू 1 है तो 1 आ रहा है, b की वैल्यू 2 है तब 0 आ रहा है. यहाँ पे b की वैल्यू 1 है तो 1, 2 है तो 0 और 3 है तो 1. इफ यू जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, तो आप एक चीज देखेंगे कि व्हेन द वैल्यू ऑफ b इज इवन, जैसे यहाँ b की वैल्यू 2 है तो इन दैट केस 0 आ रहा है. यहाँ पे भी जब b की वैल्यू 2 है तब 0 आ रहा है. यहाँ पे भी देखिए जब b की वैल्यू 2 है इन दैट केस 0 आ रहा है, और 4 में भी 0 आ रहा है. सो हमने यहाँ पे क्या नोटिस हो रहा है कि जिस समय b की वैल्यू हमारी इवन चल आ रही है तब 0 प्रिंट हो रहा है, एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ b इज ऑड, जैसे यहाँ पे देखो b की वैल्यू 1 ऑड है, 3 ऑड है, तो वहां पे 1 1 आ रहे हैं. ठीक है, तो b की ऑड वैल्यूज पे 1 आ रहे हैं, b की इवन वैल्यूज पे 0 आ रहे हैं. सो व्हाट इज द कोड दैट वी हैव टू डू ओवर हियर, इन स्पाइट ऑफ a, नाउ वी आर गोइंग टू चेक द वैल्यू ऑफ b. if b mod 2 equal to 0, that if it is an even number, so in that case we have to print 0. Okay, in that case we are going to print the 0 and end option is set, right? But if it's not even, it is a odd number, then in that case we are going to print 1 comma end is equal to this. Okay, so let's run this code and see what will be the output. So first it asks me about the number of lines. Okay, so now you can see that yes, the first it asks me about the number of lines. Suppose if I given the number of lines is 7, so you can see that I am getting the pattern of that 1 0 1 0 1 in this way. Okay, so this is the second question for today's. Now let's move to the next question. Okay, so this pattern for printing this kind of pattern, this will be the code,
right? So you can note it down in your copies. Now the next pattern that I'm going to use today is basically 1, 2, 3, 4. So this is the pattern that I'm going to print. Okay. So let's see that how we are going to design this pattern now. So I'm just going to open the notepad, right, and let me remove all these things, and now I have to design the code for it. So that's 1, then 1, 2, 3, 4, 5, then 1, 1, 1, then 1, 1. Let me do one thing. I just put some gap in this also so that I can explain you the logic clearly. Okay, so I just put a gap of 1 line. So as I told you that whenever you want to go to the code, write the code, first you have to set the logic, and for setting the logic, first you have to plot the values of a over here. Okay, so now when the value of for the first row the value of a will be 1, for the second row the value of a will be 2, and for the third row the value of a will be 3, and the fourth row for the value of a will be 4. Okay, so now as you can see that in this case we are going to print this type of triangle. Okay, so the code for printing this type of triangle will be the same as we have done earlier also, that in that case my code is like this, that first in that I will print the space, okay, and end option will set the cursors on the same line. Then after this we have to write another loop, that is C in range. Okay, it's 1 comma, it's 2 into a minus 1 plus 1 colon, and in this case we are going to print the star. Okay, this code I am explained you in the previous lecture also. So just I am going to run this code and just see that what will be the output. So if I have given the number of lines is 7, okay, right, just wait why this happens. So this is for the space. Okay, over here I have to write like n minus a plus 1. Okay, I just forget it. So now it asks me the number of lines. Now you can see that we are getting this triangle. Okay, so now the triangle is same, so I know that printing this kind of triangle, this code is used, right? But now what I have to think over the logic is that in spite of this star, I don't want to print this star, I want to print 1 0 1 0 like this form. Okay, so now I have to build the logic that how I am going to print these different numbers. As you can see that over here the data in each row is not same. Okay, in this 1 0 1 is 1 0 0, so data is basically changing. So now I have to plot the values of other loop. Now the second loop is basically B, that is for the managing the space, so we don't have to do anything with the space. Now the third loop is basically for managing the data, so we have to plot the value of that loop which you have used for managing the data. Okay, so when the value of a is 1, the C loop value is 1. Okay, when the value of a is 2, in that case the C will get the value as 1, 2 and 3. Okay, so I hope you understand. Then when the value of a is basically 2, then in that case you will get these two values 0 1 2 3, and when the value of basically a is 3,
in that case your C variable will get the value as 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so your C variable will get these values, right? And when the value of this A is 4, in that case your C variable will get the values like C is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, up to 7 you are getting these values. Okay, so when you compare these values of C with the pattern numbers, you can think that when the value of C is 1 is printed. In the second row also, when the C's value is 1 is printed. In the third also 1 is 1, and in the fourth row also, when the value of C is 1 is printed. And you can see that at the last, when the value of C is the last one, that is 3 is basically the last value of this group. So when the last value of C reaches, then also 1 is printed. Over here the starting value is 1 and the ending value is 5. So when the start value and ending value of the C reaches, then you have to print 1. Over here also start value and ending value, that is start value is 1 and ending value is 7. So when either 1 reaches or the ending value 7 reaches, then you have to print 1, otherwise you have to print 0 in this case. Okay, so what logic that I am going to use in order to handle this case is that if C is equal to 1, yani ki when this value of C is 1, or when the value of C is equal to, now what will be the last value? We know that the C loop will run from 1 to the value which is obtained by solving this expression, that is 2 into a minus 1. We have done +1, लेकिन हमें पता है कि +1 हमने लगा रखा है, बट इसलिए लगाया है क्योंकि भैया जितनी वैल्यूज यहाँ पे आती है उससे कम तक चलता है ना. सो मेन तो हमारी लास्ट वैल्यू यही आएगी, 2 into a minus 1 का जो आंसर होगा वही लास्ट में आएगा. सो इन दैट केस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ द वैल्यू ऑफ ए सी इज इक्वल टू 1, या वैल्यू ऑफ सी जो है वो 2 into a minus 1 के बराबर हो जाती है. इन दीज टू केसेस मैं क्या प्रिंट करूँगा, मैं 1 प्रिंट करूँगा, एंड में ये लगा देंगे. और इफ अगर C की वैल्यू जो है इट इज़ नॉट इक्वल टू 1 या लास्ट वाली नहीं होती है, सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू प्रिंट 0. ओके, और एंड इज इक्वल टू दिस वन. सो इस तरह से हमने कोड बना दिया. अब चलिए हम इसको रन करके देखते हैं, सी कि हमारा यही आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा. सो लेट्स रन इट. सो नाउ अब इससे नंबर ऑफ लाइन्स मांग रहा है. सो आई विल गिवन द नंबर ऑफ लाइन्स इज 7. सो नाउ यू कैन सी दैट द triangle is printed but with the value of 1 0 1 0 like this. Okay, so the code for this pattern is basically this one. So you can note it down also that the code for printing this pattern is like this. Okay, so after that let's move to another pattern also. So the code for today, that the next code that I'm going to do is 1 2 1. Okay, 2 3 2 1, and then 2 3 4 3 2 1. Okay, now I have to print this pattern, right? So obviously you can understand that the code will remain the same, but obviously we have to manage what I have to write in this C loop. Okay, because whatever I print in the C loop, that data will be printed over here. So now I have to think about the logic of this pattern. Okay, so let me first remove all this and just plot the diagram for it. So it is let me do one thing, I simply copy it and paste it over here. Okay, so this is my code, and let me give a gap of one line so that I can easily show you the plotting of different values. Okay, so ये बन गया हमारा, and after that we have to show the values of different values of A.
नाउ अब जैसे कि फर्स्ट लाइन के लिए द वैल्यू ऑफ ए इज़ 1, फॉर द सेकेंड लाइन द वैल्यू ऑफ ए इज़ 2, फॉर द थर्ड लाइन द वैल्यू ऑफ ए इज़ 3 एंड द फोर्थ लाइन व्हेन द वैल्यू ऑफ ए इज़ 4. ओके, अब मुझे पता है कि जो डेटा के लिए जो लूप यूज़ हो रहा है दैट इज़ ऑफ सी वाला वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसमें. सो लेट्स प्लॉट द वैल्यू ऑफ सी ऑल्सो. व्हेन द वैल्यू ऑफ ए इज़ 1, सी वैल्यू इज़ only 1. When the value of a is 2, the value of c will be either 1, then 2, then 3. Okay, c will get these three values, right? 1, 2 and 3. And when the value of a is basically 3, in that case c will get the value as 1, 2, 3, 4 and 5, right? So the different values of c is like this. And when the value of a is 4, in that case the c will get the values as 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, so these are the different values of c that will be used, right? So now अब हमें सोचना है कि what will be the logic. तो मेरे को लगा कि यार c की वैल्यू ही प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज यू कैन सी दैट व्हेन जब c की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट होगा, c की वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट होगा. लेकिन ये क्या, जिस समय c की वैल्यू 3 है तो 1 प्रिंट हो रहा है. नीचे भी आप नोटिस अगर करेंगे तो जब c की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो रहा है, 2 है तो 2 प्रिंट हो रहा है, 3 है तो 3 प्रिंट हो रहा है. बट जब c की वैल्यू 4 है तो 2 हो गया, 5 है तो 1 हो गया. अब मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है. यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यार यहाँ पे तो पहले कुछ पर्टिकुलर पॉइंट तक वैल्यू इंक्रीज हो रही हैं एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं. तो भाई ये इंक्रीज करके डिक्रीज करना ये काम कैसे होगा हमारा परफॉर्म. ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या लॉजिक बनाया. अब मैंने कहा यार ए बी सी किसकी वैल्यू में चेंजेस करूं. तो देखो पहली बात, आपको यहाँ पे किसी लूप की वैल्यू को नहीं छेड़ना, बिकॉज लूप जो हमने बनाए हुए हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में मूव कर रहे हैं. जैसे 1 से n+1 है, ये 1 से यहाँ तक है, ये 1 से लेकर यहाँ तक है, तो उन लूप को एज इट इज रहे, उन लूप में कुछ चेंजेस नहीं करने. पर मैंने कहा यार यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक वैल्यू बढ़ रही है फिर घट रही है. सो ओके कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, इसके लिए आप एक एडिशनल वेरिएबल ले लीजिए. ठीक है, क्या ले लीजिए, एक एडिशनल वेरिएबल ले लीजिए. एंड यू कैन सी दैट हर लाइन में स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, हमेशा 1 से हो रही है ना. सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे पता हर लाइन में डेटा प्रिंट करने के लिए ये सी वाला लूप स्टार्ट होता है. सो मैंने यहाँ पे क्या किया, आई हैव टेकन अ वेरिएबल एक्स और उसको मैंने 1 वैल्यू दे दी. यानी कि जब कभी मेरा कंट्रोल इस लूप के अंदर आएगा तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस समय 1 हो जाएगी. ठीक है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक्स की वैल्यू को प्रिंट करूँ और इंक्रीज करता रहूँ. लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है कि x की वैल्यू मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट तक इंक्रीज करनी है और उसके बाद फिर मुझे डिक्रीज करनी है. तो ये पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे यहाँ पे जब तक मैं 4 तक मेरी वैल्यू नहीं पहुँच जाती c की, तब तक इंक्रीज करते रहो. यहाँ पे देखो 3 के बाद डिक्रीज करना शुरू हुआ, यहाँ पे 2 के बाद डिक्रीज करना शुरू हुआ है. तो अब मैंने कहा यार ये लॉजिक कैसे सोचूं. अब देखो जब सपोज मान लो a को लेकर लॉजिक नहीं बन रहा, c को लेकर लॉजिक नहीं बन रहा, तो आप उन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखो. आप एक चीज़ देखना है यहाँ पे, जब तक c की वैल्यू a से छोटी थी तब तक इंक्रीज हो रहा था. जस्ट मैं इस लास्ट वाले को लेके चलता हूँ. अगर मैं ये कहूँ कि भाई जब तक c की वैल्यू लेस देन a है तब तक इंक्रीज हो रहा है, और जैसे ही c की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू a होने लग गई तब डिक्रीज हो रहा है. अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे c की वैल्यू 1 है, a 4 से छोटी है तो इंक्रीज हुआ, फिर c की वैल्यू 2 है, 4 से छोटी है तब देखो इंक्रीज हुआ, c की वैल्यू 3 वो भी छोटी है तब देखो इंक्रीज हुआ, c की वैल्यू अब हो गई यहाँ पे 4 जो कि a के बराबर है. तो देखो अगली लाइन में क्या, अगला नंबर क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया, 3 आ गया. फिर c की वैल्यू हो गई 5 जो कि 4 से बड़ी है तो फिर डिक्रीज हो रहा है, c की वैल्यू 6. तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करो कि जिस समय c की वैल्यू, देखो आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, जिस समय c की वैल्यू 1 है वो लेस देन 4 है तो आपने क्या करा, इंक्रीज करा. ठीक है भाई, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे पहले x की वैल्यू 1 थी, लेकिन जैसे c, जब उसने चेक करा c की वैल्यू 1 है तो उसने इंक्रीज करा, x की वैल्यू को बेसिकली 2 कर दिया. जब c की वैल्यू 2 थी वो भी a से छोटी है तो इंक्रीज करा, c की वैल्यू 3 हुई वो भी छोटी है तो इंक्रीज करा. नाउ c की वैल्यू 4 हो गई, a के बराबर हो गई, तो देखो अगला नंबर डिक्रीज हो गया. c की वैल्यू 5 a से बढ़ गई तो और डिक्रीज हो गया, c की वैल्यू 6, तो बेसिकली डिक्रीज होता जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो सिंपल लॉजिक है कि भैया हमने अब यहाँ पे क्या करना है कि भाई x1 है, हमें पता है कि लाइन की शुरुआत जो है, जो प्रिंटिंग की शुरुआत हो रही है वो x की वैल्यू से हो रही है. सो वी विल सिंपली प्रिंट द वैल्यू ऑफ x फर्स्ट
एंड देन सेट द एंड पैरामीटर, राइट। x की वैल्यू प्रिंट करने के बाद नाउ यू आर गोइंग टू चेक इफ द वैल्यू ऑफ c इज लेस देन a। अगर ऐसा है देन इन दैट केस आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और अगर c की वैल्यू जब x उसके बराबर हो गई देन इन दैट केस x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। सिंपल, ठीक है। तो जब कभी भी वो कंट्रोल्ड इस लूप में आएगा तो पहले तो x की वैल्यू इस लूप के अंदर एंटर करने से पहले ही 1 हो जाएगी, सो दैट उस लाइन की जो प्रिंटिंग है वो 1 से स्टार्ट हो। और सिंपल ये पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर x c और a की वैल्यू कंपेयर करेगा। अगर c की वैल्यू a से छोटी होगी तो x को इंक्रीज करता रहेगा, और जब वो c की वैल्यू a के बराबर है उससे बड़ी होने लग जाएगी तो उसको डिक्रीज करने लग जाएगा, ठीक है। सो लेट्स एक काम करते हैं, हम इस लूप को, इस कोड को एक बार प्रिंट करके देखते हैं, चला के देखते हैं व्हाट विल बी द आंसर। सो नाउ इट आस्क मी अबाउट द नंबर ऑफ लाइंस। जैसे नंबर ऑफ लाइंस एंटर किए आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 2 सारा एज इट इज उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमारा कोड जनरेट हो गया। तो आप ये जो हमारा पैटर्न दे रखा है उसके लिए हमारा ये वाला कोड है, ठीक है जी। सो आपको, आई होप आपको इन कोड्स के बारे में थोड़ा समझ में आया होगा कि किस तरह से इन कोड्स को आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। सो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दे देता हूं जिसको आप अपना प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से आपने काम करना है, ठीक है। सो मैं जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दे रहा हूं, जस्ट आप इसको नोट कर लीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग अपना होमवर्क में अप्लाई करके देख सकते हैं, एंड इन केस इफ़ यू हैव प्रॉब्लम इन दीज क्वेश्चंस तो हम एक डिस्कशन क्लास भी रख लेंगे इन क्वेश्चंस को, इन पैटर्न्स को समझने के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।